think for the respondent, the government had filed an appeal against orders regarding the road students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. जी सलाउद्दीन साहब हमने विड्रॉ कर लिया। These appeals have been withdrawn. अच्छा ये बताइए वो जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसने क्या काम किया? वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. Huh? The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है, सादिक संजरानी। नहीं sir, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक furnish की है sir. वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा, The report was furnished and it is on the इसमें record. लिखिए वो ऑफिस कौन है, स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, ये आपकी नंबर, उसको नंबर कर देते हैं, इत्तेजाज हसन फेडरल आपकी एक है 161 है और यही है ना? उनकी है, खुशदिल खान की है 124। सबसे पहला केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये क्या कह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की। इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना था, इनकी तो कुछ जाती मसले हैं, लेकिन हम जाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में। ये आते हैं, बताइए। तो हम ट्यूसडे को इसको रखेंगे and we want you to, we will direct this commission to provide you with the information and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. Over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these cases, all these matters pertain to, shall we keep your matters pending or shall we, आपकी भी तीन है ना, 1 2 3 जी मालिक ये विड्रॉ कर दो। 4 जी मालिक विड्रॉ कर ले। नहीं, इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल से। Ji, my lord, the instructions are to withdraw them, sir. The गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, which means that the orders will revive. My lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted, the commission has furnished its report. So इसमें देखिए CPLA 1503, 1504, 1505 and 4333, नहीं वो उन तीन का लिखें 2022, CPLA 4333 2021, पहले वो वाला लिखते हैं 2021 का। Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए, ये इनका पहले लिखें। मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है आमना जंजुआ साहब का, पहले आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें
मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें? MRS, ओके MRS आमना मसूद जंजुआ के केस में लिख दें, states that her husband Mr. Masood Janjua was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar Yes, my lord. and has not been heard ever since. And that My lord, it's on and that the- she is not, and that she had approached the commission, क्या नाम है इसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था, Notification. पेज बताया था ना 220 क्या था? 131, I suppose. आपने किसी ने बताया था अभी पेज? 131. हाँ? 131. 130 Exactly. वो तो लॉ है। हाँ ठीक है ठीक है। Had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the commission. Full stop. Others present, the commission comprises of, we are informed that the commission comprises of the following: Mohammad Sharif Virk, the chairperson is Javed Iqbal Sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the commission is Mr. Justice retired Javed Iqbal, Mr. Justice retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice retired Zia Parvez, and Mr. Mohammad Sharif Virk. As member, वो members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the ये लिख देंगे। commission. ब्रैकेट में उसको एक दफा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा, ठीक है? उसके ब्रैकेट में कमीशन. The Mr. Khalid Naseem, आप सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार हैं? Registrar, sir. Registrar of the commission, however, states that the commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered, returned home. Full stop. इनका लिखने civil miscellaneous appeal number 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Itazaz Ahsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Itazaz Ahsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशी खान का करेंगे ना, क्योंकि तो बड़ी कर देंगे ना, सुन के उसी ये करेंगे तो अभी नंबर शुरू कर दें,
नंबर कर दें उसको लाओ। उसी पर रखी नंबर करेंगे तो फिर इंटीग्रिटी का इशू है, मैंने तो उसको उसी बना तो लाएंगे ना, कि तुम्हारे को पर्सनल मिस्टेक बनी है उसको फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अच्छा फुल स्टॉप। द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन करेंगे। similarly another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same of his objections also raised, and he has filed CM appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons and if the other grievances raised therein, comma, some of which are personal, comma, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard. इत्तेज़ार साहब, और आपका भी यही होगा, वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे। missing/enforced नहीं, वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे, आपको बता रहे हैं अभी से। हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं। इनका भी लिख दें टू बी नंबर्ड। That is not, as I submitted, that is not just an individual case or individual cases. They set and establish a pattern. And that pattern is the one that your lordship has to accept. It's similar fact evidence. साहब देखिए ना, I know, देखिए, I'm very cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then देखिए एक सेकंड ठहर जाइए ना, that doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort, your remedy can be sued for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in under Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there. And we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें, अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे, लेकिन उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे। अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ब्रॉड स्कोप है, मिसिंग पर्सन का ब्रॉड स्कोप है। अगर आप इससे मुतमईन नहीं, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे, फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज, फिर हम आपको लंबी तरफ सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे। मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग है जी सर, तो आप करिए अर्ज। जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग नहीं होती, मेरे होते मुझे नेक्स्ट डेट पे कर। 2 जुमले तो अर्ज कर लें। चले करिए। मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है, ये आपको बताना है एक पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम which you are concerned with in the broader petition. ये एक पैटर्न को, एक डिजाइन को एड्रेस करता है। These individuals as such don't matter कि कोई उनमें ये डार था या कोई फरक हबीब था या कोई, it is the new mode of What basis are you saying this? सर वो मैंने एग्जांपल Are you dar? No. Are you his lawyer? No. I am Then here. on what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम पब्लिक इंटरेस्ट में आ गए। सर 4 लोगों के नहीं है ये। 4 लोगों के आपने नाम लिखे। 4 लोगों के नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे, but they establish a
pattern Four people. of very, not four, sir, there are more than four. आप पढ़ लेते हैं अभी आगे पढ़ लें. आगम और भट्टी We have दो तो यही है. asked the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given a statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or वो against तो Article 4 दूसरे of the केस में हमने किया है. नहीं, वो तो दूसरे केस में किया है. नहीं, मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे. वो दूसरा केस था, वो तो वो वाला था, वो कंटेम्प्ट वाला. इसमें तो नहीं किया, वो दूसरे केस में था. उसमें बोला कि आप हमें स्टेटमेंट देके दिए. नहीं, वो उस केस में किया. My lord, it was in this case. हाँ? It was in this case. इसी में ही था. नहीं, वो वाला केस, वो जो कंटेम्प्ट वाला था. नहीं, इसी में notice हो गया ना वो. हाँ? इसी में था. इसी बलोच मिसिंग It's a long day, but वो ये पेज 6 पे बलोच मिसिंग long day for पर्सन. you, I know. चलिए हम ये बात भी देखते हैं. अच्छा, वो और क्या रह गया था? The commission is directed to submit comprehensive report should and provide copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not, why not. ठीक है. फिर हम बाकी चीजें बाद में कर लेंगे. कमीशन हमारा हो रहा है 3 बजे से, आप भी तो उसमें आ रहे हैं ना हमारे सामने. कुछ बातें रह गई है तो हम इसको बताएं. कितना टाइम दें आपको? My lord, क्योंकि फिर आप देख लीजिए इनकी कुछ एंजाइटी और कमीशन वगैरह आप देख लें. इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द कमीशन और नॉट, वो जब रिपोर्ट आपको देंगे उससे बातें आपके जहन में आ जाएंगी. फिर आप क्या करना चाहते हैं, तो कोई आप हमें डेट सजेस्ट कर दें. तो अब एक इनसे पूछते हैं. दूसरी बात, एक हमने जो नोटिस ली थी, मगर इन्होंने कहा था, मगर इन्होंने दे नॉट कंसर्न विद दैट. सॉरी, बुरा ना माने शोएब साहिन साहब. हमने कहा था जी यहाँ से जो लोगों को उठाया गया था, उन्होंने कहा मैं ला रहा हूँ पिटिशन, मैं अमेंड कर रहा हूँ इसको. उन्होंने ना लाए पिटिशन और ना अमेंड किए. अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये उनका बुनियादी हकूक है. अगर वो कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं वो एक अलग बात होती है. ये नहीं कि उनको धक्के मार से, डंडे मार से उनको उठाया जाए. नहीं, उनको बहुत रुस्वा कर रहे हैं. ये बहुत रुस्वा किया है. एक सेकंड सर, आपने तो नहीं लिया है ना. इन्होंने वादा किया था वो करेंगे, नहीं किया उन्होंने पूरा वादा. हम अब अपने तौर पे कर रहे हैं. वी डोंट वांट दिस सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle, unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent. They have a right to protest. That right to protest must not be in any manner curtailed, let alone by force. ठीक है, that's their fundamental right. We may just add things in the thing. So now we have to go to the commission. Now we just propose a date. How much time do you want? No, my lord, if And if you, can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case? of course, Huh? of course. Mr. Faisal Siddiqui? You are already appearing for someone or not? No, I'm amicus in all these missing Okay, person then- cases before the Islamabad High Court. Achha. That is why I had this. The amicus has to foot his own bill. ये बलोच जो यहाँ आए हुए हैं ना जी, जस्ट मैंने विजिट किया सर. इट इज पैथेटिक. रात को तकरीर ना करें, कागज का टुकड़ा लाइए, फाइल कीजिए पिटिशन. वो मिस्टर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case. Whenever this case is fixed, his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan. Travel and staying costs, that's all. No fees. अच्छा, इसमें May I just ये डेट कौन सी दे रहे हैं? ये बताइए अटॉर्नी जनरल, what will be a reasonable time? My lord, if the commission can give. हाँ, ये आपको देंगे. कितने दिन में आप दे सकते हैं, पहले बताएं. इनको ये पूछ लेते हैं इनसे. खालिद साहब, आप कितने दिन में इनको दे सकते हैं? ताकि वहां से खालिद साहब, कितने दिन में आप इनको दे सकते हैं? कुछ आइडिया दे रहे हैं. टाइम दे दें 2-3 भाई, आपको कितने दिन में इनको? कम से कम 3 हफ्ते दे दें, क्योंकि हमारा स्टाफ है हम नहीं, बात कर रहे हैं यार, एक स्टैंडअप भी नहीं है हमारे पास ना. नहीं,
नहीं नहीं 2-3 हफ्ते में क्या है, एक जल्दी हफ्ते का करें। काम है, 8-10 दिन में कर ले, 8-10 दिन लगे। कितने, सर कितना टाइम है? 10 days, 10 to 15 डेज देते फिर सर 10 to 15 विद इन 10 डेज। ठीक सर ये 10 डेज में आपको देंगे, फिर आप कितना टाइम लेंगे? So if they can share production orders in, let's say, Within 10 days. share production orders जल्दी share कर ले, report इन्होंने 10 दिन में देनी है, production orders 2 दिन में आ जाएंगे, आप हमें, the case can be listed, let's say, after 2 weeks. फिर 10 डेज के बाद 2 वीक्स। No, 2 weeks from now. ठीक है, फिर हम डेट तक लिख लेंगे, हाँ, तो- अपना जरा देख लेंगे कोई वो crash ना production कर orders जाए। मैं इनसे ले लूंगा 2 हफ्ते में रखा। प्रेफरेबली मिस्टर फैजल सिद्दीकी, If your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders must be on each of the cases. Yes, ये yes. कोई general report नो ना वी हो। डोंट वांट नंबर्स, ये हमें, आप हमें नाम देंगे सबके, बल्कि इनको देंगे ना। सर एक गुजारिश और है सिर्फ जी। वो ये है वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम का करते थे कि मंडे अगर फिक्स करने लगते थे कोर्ट तो वो कहते थे मंडे ना ट्यूसडे का। उनसे पूछते थे ये जब जज साहबान कि व्हाई नॉट मंडे, तो वो कहते थे केस तो पता नहीं चले ना चले पर संडे खराब हो जाए तो ट्यूसडे। ऐसे ये बताइए एतजाज साहब, आप हमारे सामने कभी आए और आपका केस ना चला हो? नहीं एक एग्जांपल देते हैं, नहीं अगर नहीं चला तो आपकी एडजमेंट की दरखास्त आई हुई होगी। हमारी तरफ से हम पूरा बोर्ड खत्म करके जाते हैं। अब आप देख लें 3:30 बजे हैं, ठीक है, अगर आज हम आपको देर तक सुनते हैं, मगर आज हमारी JCP की मीटिंग है, Very grateful वो to 3 you. बजे रखी हुई Very है। grateful. अदरवाइज वी ट्राई टू फिनिश द बोर्ड, एटलीस्ट आई ट्राई टू ह्यूमनली पॉसिबल। वन ऑफ आवर कोलीग्स इज नॉट वेल, she is seriously unwell and she's come and sat in court. मतलब बलोच प्रोटेस्ट के बारे में सिर्फ एक बात करनी थी, बलोच प्रोटेस्ट के बारे में चलें, मतलब सिर्फ एक बलोच प्रोटेस्ट के बारे में, प्रोटेस्टर्स के बारे में बात करनी थी। उन्होंने ये कहा कि जी जो पिटीशन पेंडिंग है हमारी वही रिक्वेस्ट करें। आपने कुछ नहीं फाइल किया, मगर हमने अटॉर्नी जनरल को जी। ऑलरेडी कर दिया है। ही इज सो फार रिस्पॉन्स। आप किसके लिए हैं? Appellant, my lord. सरदार Confucius Imam के- एक सेकंड, आपके मुखालिफ कौन है? सरदार मीर बादशाह नहीं, वकील कौन है कोई? खालिद इब्न अतीक